नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 184वीं कड़ी में आप सभी अभिनंदन। कल हम सब राष्ट्रीय प्रेस दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसकी पूर्व संध्या पर इस आयोजन की शुरुआत के लिए, जैसे कि हमारी परंपरा है, भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से मैं अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी शिक्षण में आने से पहले रेडियो आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और रेडियो पॉडकास्टिंग में समय पीएचडी के लिए आप रजिस्टर्ड हैं और एक शिक्षक के रूप में अध्यापन के साथ साथ आप अपने इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों को भी संचालित कर रही हैं और साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं में, जर्नल्स में निरंतर सक्रिय रूप से लिख रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. So, हर प्रोग्राम की शुरुआत हम सरस्वती माँ सरस्वती का नाम लेकर करते हैं, बिकॉज वी लिव इन इंडियन कल्चर और हम हमेशा हर प्रोग्राम की शुरुआत माँ सरस्वती को याद करते हुए करते हैं। तो उसी तरीके से आज भी माँ सरस्वती को याद करेंगे इस वंदना के थ्रू और फिर शुरू करेंगे हमारे शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले भी हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूले होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. By this, I welcome you all in our 184th National Media Webinar that is on upholding India's fourth pillar in our digital age. So, I welcome you all on behalf of Bharati Vidyapeeth and Communication. Thank you so much. ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी ये जो श्रृंखला है वो पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, निरंतर जारी है। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 3 दशक से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है और छोटी सी कोशिश कि देश में हो रहे मीडिया के क्षेत्र में शोध अनुसंधान को हम एक मंच देने का प्रयास करें। कोविड की पृष्ठभूमि में हमने ये अपना एक विचार की श्रृंखला को शुरू करने का छोटा सा प्रयास किया था, जिस समय ऐसा लगा था कि शायद पूरी दुनिया थम जाएगी। इस नए विकल्प को जो हमारे हाथ में आया उसके माध्यम से हमने श्रृंखला शुरू की और वेबिनार की ये श्रृंखला, इसको हम पूरी रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पर ये सारी चर्चाओं को अपलोड करते हैं, ताकि जो मित्र, अब चूंकि सारी गतिविधियां ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं, अपनी समय और सुविधा के अनुसार इन सारी चर्चाओं को सुने और किसी रूप में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर अमरीश सक्सेना, जिनका मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया एजुकेशन में अपना एक बहुत लंबा अनुभव है, विस्तृत परिचय जब मैं आपको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वे प्रोफेसर अमरीश सक्सेना का ई बुके से स्वागत करें। चूंकि हम सब आवासीय मंच पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि इस आवासीय मंच के माध्यम से भी हम उन परंपराओं को, जो हमारे वक्ता हैं, अतिथि हैं जो आते हैं, उन्हें जैसे हम सम्मानित करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं अपने फिजिकल कार्यक्रमों में, तो इस आभासी मंच पर भी हम उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि ई बुके से आपका स्वागत, अभिनंदन करें। प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। जी।
सर वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस ई बुके से हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसका जो फ्रेशनेस है, वो हम सबकी लाइफ में हमेशा अलाइव रहे। So by this, I welcome you on behalf of Bharati Vidyapeeth campus and communication today. Then this is an e-bouquet from our side, from Communication Today and Bharati Vidyapeeth. We welcome you wholeheartedly. Thank you so much, sir. Your presence really means a lot for all of us. थैंक यू। Thank you. जिस प्रकार से किसी पुष्प की खुशबू अपने पूरे माहौल को एक तरह से सुगंधित कर देती है, मोहक कर देती है, तो हमारी भी ये कोशिश है कि प्रतीकात्मक रूप से हम भी विचारों की इस सुरभि के माध्यम से दिग दिगांतर में जो हमारी भाषा हमारे प्रतीकों को समझते हैं वहां तक पहुंचे, और मीडिया से जुड़े हुए इन विषयों पर जो विचार मंथन की हमारी यात्रा है, इसमें कहीं ना कहीं वे अपना योगदान दे सकें। इस चर्चा को यस आगे सर। बढ़ाते हुए जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने जा रहे हैं और इसका यस आह्वान सर। किया था भारतीय प्रेस परिषद ने। यह दिन मूलतः भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना जिस दिन हुई थी उसी के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की अपनी एक परंपरा, उसके अपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एक एथिकल जर्नलिज्म के संदर्भ में एक माहौल बनाने के लिए, इतने सारे प्रकाशनों के माध्यम से, और जो भी मामले आते हैं उनको लेकर के प्रेस काउंसिल डिसीजन देती है, वही एक तरह से आगे जाकर के गाइडलाइन का काम करते हैं। तो प्रेस यस सर। काउंसिल ने इस वर्ष जो इसका वो दिया है विषय चर्चा के लिए, वह है डिजिटल युग में भारत के चौथे स्तंभ की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, अपहोल्डिंग इंडियाज फोर्थ पिलर इन द डिजिटल एज। क्योंकि ये डिजिटल दुनिया जिसने हमारे पूरे एक तरह से वैश्विक जो है प्रभाव पैदा किया है, हमारे जीवन के संस्कारों में, जीवन शैली में ये डिजिटल दुनिया पूरी तरह से रच बस गई है, तो फिर मीडिया भी कैसे इससे अप्रभावित रहता है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो हमारे चार स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी के साथ साथ प्रेस भी अपनी भूमिका को कितनी निष्ठा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के साथ निभा सकने में सक्षम है। ये जो चारों स्तंभ हैं लोकतंत्र के, मीडिया जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं, संविधान ने भले ही चौथा स्तंभ नहीं कहा हो, लेकिन आम आदमी ने जिस तरह से प्रेस की अपनी एक भूमिका है हमारे लोकतांत्रिक समाज में, हमने उसको एक चौथी सत्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है, ताकि वो सत्ता पर नियंत्रण रख सके, सामाजिक जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सके और लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। लेकिन जब आज पूरी दुनिया इस डिजिटल युग में पहुंच गई है, तो इस लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, फोर्थ स्टेट है, उसके सामने भी जहां अनेक तरह की चुनौतियां हैं, तो नए अनेक तरह के अवसर भी खुले हैं। भारतीय पत्रकारिता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। एक पूरी की पूरी संघर्ष यात्रा को हमने देखा, समझा, महसूस किया है। तो एक तरह से प्रिंट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक की ये लगभग 250-300 वर्ष की जो यात्रा है, ये ने सूचनाओं तक उस पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या एक क्लिक के माध्यम से न सिर्फ खबरें बना सकता है, शेयर कर सकता है, बल्कि एक बहुत बड़े समुदाय तक, लाखों लोगों तक पहुंच सकने में भी वो सक्षम है। ये स्वतंत्रता आज के दौर में जितनी बड़ी एक क्रांति लेकर के आई है, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ नए खतरे भी लेकर के आई है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सूचनाओं के प्रसार का पूरा परिदृश्य को बदल दिया है। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बहुत सारे माध्यम हैं, जिसने हर व्यक्ति को एक संभावित सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में एक तरह से एक अवसर दिया है, जहां वो अपनी बात कह सकता है, एक कम्युनिकेटर के रूप में अपनी बात को रखने में सक्षम है। अब खबरें केवल न्यूज रूम तक सीमित नहीं है, अब ये जो खुलापन आ गया है, उसमें सूचना की विश्वसनीयता के सामने भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो एक तरह से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसके साथ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन से जाल में हम फंसते चले गए हैं, उसने नई समस्याएं हमारे सामने पैदा की हैं। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हुई हो।
डिजिटल युग में पत्रकारिता के नैतिक मूल्य, सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनहित, ये पहले से कहीं अधिक मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब हर मीडिया इंस्टीट्यूशन, मीडिया के जो चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, इवन मैं तो कहता हूँ जो मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपने यहाँ किस तरह से इन सूचनाओं के वेरिफिकेशन की तैयारी करनी चाहिए, उनके यहाँ होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की दिशा में वो कहीं अपना योगदान दे सकें। हम एक इस तरह की माहौल बना सकें कि अब स्पीड महत्वपूर्ण नहीं है, पहले देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सही सूचना दी जाए, वो आज के दौर में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये जो सारा परिवर्तन है, इसको लेकर के हमने जो आज आमंत्रित किया है, एक ऐसी शख्सियत को, जिनका अपना लंबा अनुभव रहा है मीडिया इंडस्ट्री को, उन्होंने इंडस्ट्री चाहे प्रिंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है उसको बहुत नजदीकी से देखा है, वहां आपने काम किया है, इन सारी चीजों को, उसकी जो अंदरूनी स्थितियां हैं उनको आपने समझा है गंभीरता से, और पिछले कई वर्षों से मीडिया शिक्षण के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उनका जो एक अनुभव है और दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं, तो वो जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो अनुभव है हम उनसे आज साझा करने का अनुरोध करेंगे। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उद्योग और शिक्षा जगत दोनों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। उन्होंने प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल और फिल्म, जितने भी ये प्रमुख माध्यम हैं, इन सबों में सभी में एक तरह से काम किया है, और प्रमुख प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में भी आपने एक तरह से लीडरशिप का रोल है उसको निभाया है। एक प्रख्यात अकादमिक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने देश विदेश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अ, आपका जुड़ाव रहा है, और शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च, इन तीनों स्तरों पर उनका योगदान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समादृत है। उन्होंने यूनेस्को परियोजना के तहत मालदीव आदि अनेक देशों के पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया है। जर्मनी की वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म स्टडी WJS परियोजना में जो उसका भारतीय हिस्सा है, उसका भी आपने लीडरशिप एक तरह से दी है और उस कार्य को संपन्न किया है। ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल GMEC जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों को आप नेतृत्व दे रहे हैं, और उसके माध्यम से आपने देश विदेश स्तर के अनेक तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हैं उनका भी आयोजन किया है। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना ने 4 विषयों में PhD की MA किया है, अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है, राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता जनसंचार, लॉ और मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तरह के विषयों को आपने एक तरह से गंभीरता से उनको पढ़ा है। प्रसारण, रेडियो की जो प्रसारण नीतियां हैं उस पर आपका PhD है, और मीडिया नीतियों और प्रसारण व्यवस्था पर एक तरह से आपका गहन शोध, जो हमारी इससे संबंधित नीतियां हैं उनके लिए भी एक आधारभूत मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मीडिया अध्ययन, पत्रकारिता, जनसंचार नीतियों और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जुड़े प्रोफेसर सक्सेना की लगभग 70 से अधिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने सिंगल ऑथर के रूप में, उसके एक मुख्य लेखक के रूप में, संपादक के रूप में, सह संपादक के रूप में और चैप्टर राइटर या कंट्रीब्यूटर के रूप में जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ एक व्यापक साहित्य तैयार किया है, जो विद्यार्थियों, शोधार्थियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में आज भी मार्गदर्शन करता है। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना वर्तमान में जो एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन की स्थापना के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही वहाँ भी जर्नलिज्म और मास कॉम के जो कोर्सेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वर्चुअल कैंपस, इसको तैयार करने की दिशा में भी आप लगातार अपना एक परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अमरीश सक्सेना से अनुरोध करूंगा कि जो आपका इतना व्यापक लगभग 4 दशक का जो आपका अनुभव है मीडिया इंडस्ट्री का, मीडिया एजुकेशन का, उसके आधार पर आज का जो ये महत्वपूर्ण विषय है कि इस डिजिटल दौर में किस तरह से हम इस मीडिया को एक संस्थागत रूप में हम बचा सकते हैं, और भविष्य की जो इसकी संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ मार्गदर्शन दें प्रोफेसर अमरीश सक्सेना। धन्यवाद प्रोफेसर भानावत, इतना विस्तृत परिचय देने के लिए। मीडिया एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, आप और हम सारे लोग अपने अपने स्तर पर जो भी योगदान हो सकता है वो देते रहे हैं, देने की कोशिश करते हैं, और हम सबकी आपकी सक्रियता देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि कुछ और ज़्यादा और कुछ और अच्छा काम किया जाए।
जहाँ तक आज का विषय है, क्योंकि मैंने जैसा आपने बताया अभी पत्रकारिता के साथ ही शुरुआत की, फिर पत्रकारिता शिक्षण में आए, तो हर तरह से हमने पत्रकारिता को देखा है। और जब हम आज के विषय की बात करते हैं, मानव जी, बस एक आपसे वो चाहूँगा मैं, आप क्या चाहते हैं, मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में हाँ, हाँ, बोलूँ जो या कैसे जिसमें बोलूँ? आप कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश जी, में, बाइलिंगुअल, जैसा आपको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं जी, है। ठीक जी। ठीक है। So, I mean, the topic that has been decided for today, which is upholding India's fourth pillar in the digital age. Now, the first part I would like to look into first, which is India's fourth pillar. Now, as you yourself initially explained that when there are three organs of the state, this is normally considered the fourth organ. But whether it's actually the fourth organ or not, this is something which we should look at the initial stage. Now, if you look at the Article 19, freedom of speech and expression, which is actually the original article, original provision in the Constitution, which gives us freedom of speech and expression, and this is the freedom which is actually enjoyed by the media. This is unlike the United States, where there is a separate provision for the freedom of the press. So we do not have freedom of the press. So whatever is there in Article 19(1)(a). But then there is also Article 19(2). Article 19(2), many of the people who are in this session may not be knowing that there were hardly any provisions initially in Article 19(2). 19(2) has evolved. It has evolved in the sense that nowadays there are at least eight provisions under Article 19(2), and there are provisions like contempt of court and defamation. Now, these two laws, because we also have the separate law on this. In defamation, also, this is part of the criminal law of the country, and in contempt of court, also, it also has two parts: civil as well as criminal. Now, when a freedom is given, there has to be a limit on the freedom, which nobody would disagree. But then, limit does not mean completely creating obstructions in the way to freedom, because these are considered the obstruction, because speech can never be considered criminal. uh, I mean, to some extent, I can agree that if there are civil provisions which can be acceptable, but putting a criminal clause on the freedom of the press, which, I mean, for us in this session, which means freedom of the press and freedom of the media. So, if there is such kind of restrictions, such kind of prohibitions, so I don't feel that in such a case, media is actually the fourth pillar. This is one very important aspect which we need to look into, though my focus will remain when we say media, when we say journalism, obviously my focus is mainly on the news side, not on the entertainment side. But just an example, I can put forth this point, that we have a provision of censorship in the case of films. Now, here again, a problem arises, whether the freedom of the news media, freedom of the entertainment media, whether these two can be related, whether these are two different things, two separate things, or they are the one and the same thing. And this film freedom is covered under Article 19(2). That is why this is covered under reasonable restrictions. And this is K. Abbas case, still since that time till date, that censorship is very much there, and I will finally link it to what I am saying at this point towards the end of my talk. I will try to link it to the restrictions or the regulations which has been brought by the government in February 2021. Right. So these are the things which we need to look into when we try to discuss something related to the fourth organ of the state. Right. Yes, sir. Now, going to the history, because we have to go to the history to the extent that we understand what is meant. I mean, not exactly the fourth pillar, but what is meant by journalism, how journalism arrived in India, what were the conditions that time, how journalism evolved during the last more than 200 years, and how this growth
took place and what kind of phases have happened from 1860 to 2025. So we all Yes, know sir. this is a part of the subject that we normally teach to our students, how journalism is started. It started with the Hickey's Gazette, and from that time to the time of Raja Ram Mohan Roy in the beginning of the 19th century, I mean 1818 and 1821, and then thereafter the time to time the press acts were brought and a lot of restrictions took place. One common thing which has remained there from 1680 to this date, from Hickey's Gazette to this time, that newspapers have mostly been anti-establishment, right? Anti-establishment in the sense newspapers or journalism. When we say journalism, the normal, and this debate is very much on even in today's time, in 21st century and sitting in 2025. Newspapers have always been trying to find faults with the people who are sitting in the governance, and raising voice against that so that the system could improve. I will not say, because there is a lot of debate in today's time whether this is positive or negative. I will not look into the positivity and the negativity in the whole thing. For me, journalism is always positive if it is journalism. I mean, there are aberrations also. There are, I mean, such kind of practices also which happen in journalism which cannot be considered part of the journalism. But if we talk about the actual journalism, then journalism is always positive, because whenever as a journalist you are trying to find fault with somebody, with the policies, with the governance, this is in fact an honest effort to set the things right, to remove whatever wrongdoings are happening, and to see to this that a system should be in place which is for the people, which is for the betterment of the society, and which is for development, right? So this part of journalism must be understood. But then, as I said, since Hickey's Gazette till this time, most of the time journalism has been anti-establishment. And when we say anti-establishment, again I will try to add few more things. This means journalism cannot be hand in glove with the people who are in power. If people if people in journalism are hand in glove with the people in power, then there can be no journalism possible. This, I'm not saying that there is some enmity between the two, but then the two sides are adversaries to some extent, that wherever some policy has gone wrong, it is the responsibility of the press to raise its voice against that. So that remains. Whatever changes have happened, technological front also, content के level पे whatever changes have happened, but that is something which has remained there. Now coming to technology. If we talk about technology, I always put forth this point that the whole history of journalism, growth of journalism, has remained dependent all through more than 200 years, has remained dependent on technology. Without technology, there can be no journalism. And this was true, I mean, earlier also. For instance, when there used to be the treadle machines, then the newspapers used to be monthly, at the most fortnightly, and later on we find that in the middle of the 19th century there used to be, because Times of India became a daily newspaper from a weekly newspaper, and the Hickey Gazette started as a weekly newspaper. So why these newspapers or magazines were weekly or fortnightly? Because the quality printing technology was not available. Very few copies could be published in 1 hour or 2 hours time. So obviously, if more copies were not possible to publish, then the circulation was also not to happen. So it was directly related. And then if Banavaji will remember, initially there used to be the hand composing, and then that was replaced by lino machines, the mono machines. So obviously composing was a big problem. Composing was a separate component, and
printing was a separate component. Though, in a way, if we look into the printing technology, these are the two different activities which are still there happening differently. But now, with the advent, with the growth of the technology, that line has very blurred between the two activities. But when these used to be two separate activities, then the printing process was very slow, and publishing daily newspapers were not possible. But when towards the end of the 19th century, when this rotary machine came into being, then the printing process was accelerated, and these lino-mono machines also came. And when in the 20th century, this whole composing, I mean, right from PTS system to the current system, which has been there now for the last 60, 70 years, when this whole offset printing technology came. And if we look into today's time, because the people who are there in the session, they are the people of today. If they can look into now, the whole typing process has become so smooth. There is no hard material involved now. No hand composing, no lino, no mono, no lag, nothing. So you type it out directly on the computer, right? Now the other technology, the printing. Now what happens when we try to print whatever we are typing? Now that used to be a problem for quite some time. But nowadays, that printing process has also been linked to the typing process. That's a revolution that has taken place. Now, if we are typing something, we can immediately take a printout. Obviously, the full size paper, the print of the full size paper is not possible. But then, to some extent, we can do that, and we have such kind of machines which can be directly linked to our laptop, to our desktop, and printing the sheet is become possible. So now, because of the technology, typing has become very fast. Because of the technology, the offset printing machines, as I refer to, have accelerated the process as far as the speed is concerned, and as far as the quality is concerned. For a very, very long time, till 1960s and 70s, we can simply look at this: newspaper were considered as a product which were bringing news to us, and the readers did not bother what was the quality of the newspaper. Quality in the sense the paper quality, quality in the sense the legibility, the ink was not equally spread on the surface. All those problems used to be there, and people were believing that for us newspaper is in fact for news. So we will not look into what kind of font, what kind of ink, and what kind of paper used to be there. Now that has changed. How this has changed, this is also interesting to note. How this has changed, because earlier there used to be print media, then radio came, though radio came quite early in India, and then television came. I mean, radio came in 1927, then the television came in 1959. And when all these I mean, this multimedia, I mean, different media came to the fore, then one media started making an impact on the other media. So this quality part, in terms of legibility, in terms of the presentation, as far as the size of the page is concerned, as far as the width of the column is concerned, as far as the use of the four colors is concerned, all this changed, and all this happened because of the impact of television. So one media started impacting the other media. So the technology, I mean, so I wanted to say this, how much technology is important, because we are talking about as to what is the impact of the digital age on all the media platforms. So technology is very, very important. Now, if we look into the broadcast, now when I say broadcast, I'm referring to both radio and television. So when this radio started, it was through transmitters. Still, it is with transmitters. It is for a very, very limited time. If we take example as to what happened in India, for a very, very small time, there used to be the broadcasting with the help of the satellite. But that did not work for long. And here, this is again an important aspect when we talk about media and the growth of media and the contemporary conditions and all.
Indian media users have always been the kind of users who are not ready to spend money for using the media. This has also impacted the content, the delivery part of media or journalism in today's time. And this is an example. Radio is an example. When satellite radio came, it was costly because people used to pay for listening to those kind of programs and channels, and since people were not in a habit of making payment, satellite radio failed, and the company which was providing satellite the broadcasting through satellite closed down. From that time till date, it is, I mean, I don't remember the exact year, but it happened sometime about 25-30 years back. Finally satellite radio closed, right? So in today's time there is no satellite radio. All the radio broadcast, whether it's the channels of Akashwani or whether it's the private radio station from Radio City to Radio Mirchi, they are on the terrestrial broadcasting. They are that broadcasting is happening through transmitters, right? But again, coming to technology, when the satellite came, initially before satellite, obviously, if I mean, many of you might be remembering or you would have read, when television came to India, it was on an experimental basis, and later on, uh, as far as the technology is concerned, television was also using the transmitters. In Doordarshan also, the transmitters even today are being used. But when satellite came, the whole face of the Indian media industry changed, and we saw the growth of 24 hours news channels, television news channels. Now, this is something again which underlines the importance of technology. This started in late 1990s, sometime. I mean, this 24 hours news channel started basically in 1997, right? So, this, because of the technology, this happened. This, this proves the point that media exists, media survives, and media grows based on what kind of technology we have. Now, coming to the present day technology, the digital technology. Now, what has happened with digital technology? One very remarkable thing, though we all understand, but I would like to underline that what is meant by digital technology. And when we say digital technology, again, the beginning happens with the advent of internet. Internet came, everything changed, right? And what is the major change that internet brought to media, to journalism, to content creation, to content delivery? That is that the conventional process of communication in media, what was that? What was the conventional process of communication in media? There used to be two sides. One side was creating the content, generating the content, and the other side was receiving the content, using the content. That changed. Now the receivers, with the advent of digital technology, the receivers started turning into content creators. So the whole conventional system of communication in media, that completely transformed. I mean, a lot of such things you would have looked into. There was a time when we this whole concept of the citizen journalism was there. What was citizen journalism? People used to record their own thing. People used to take their own photographs, and they were sending it initially. Many newspapers, I remember, even NDTV example I can give. They started a separate program on citizen journalism. Many other channels started wherein they called upon the users, the common people, to record something and send it to them, and they will broadcast it. So this is again something which we must look into keenly. The the technology became a bridge between the readers, between the viewers, and the journalist. The journalist
Earlier, in conventional form of journalism, the journalists used to be, even today, the journalism are supposed to be somebody who are collecting the information, who are structuring the information, and who are providing that information in the form of news, in the form of news capsule, in the form of news bulletins, in the form of newspapers to people. इसको ना मैं मैसेज But then what happened? Once the common people started doing the same thing, so the job of the journalist was supplemented by the people who were helping them in creating some good stuff. So this happened with the advent of technology. This happened with the digital age. So we must always welcome such kind of developments, because what is journalism? In fact, journalism is something which is disseminating information among the people. If I remember the very first judgment in 1950, which was perhaps when Chief Justice Patanjali Shastri delivered the judgment, what he said, if I can tell you in just one or two sentences, and I believe that that definition even stands today. He said that the job of the journalist or job of the newspaper is to provide information to the people, and all that information helps the people to enlighten them, to educate them, so that they can take the right kind of decisions when it comes to vote, when it comes to choosing their own representatives. And once right kind of representatives are chosen, we will get the right kind of governance, and the country would develop. So there is a direct connect between the journalism and the governance and the policy making and the development of the country. So this statement of the Chief Justice or then Chief Justice of India stands even today. So that's the job which journalists are supposed to do. And when we talk about democracy, and particularly grassroots democracy, so in grassroots democracy, in fact, much depends on the dissemination of information, and that information should percolate even to the lowest level of the society. And digital technology has helped in that. I mean, the examples are very much evident. We all do that. We all use WhatsApp. We all use Facebook. We all use Instagram. I mean, all these platforms are the reflection of this, that information creation, information circulation, information dissemination is in our hands. So even, I mean, to the extent that whatever is appearing on Twitter, whatever is appearing on Instagram, that information is picked up by the traditional media, and they carry all that information. So that barrier between information creators and information receivers have vanished. But then I'm always for technology, but then it's pitfall, uh, because every technology brings a lot of I mean, there is a dark side to it, and if the users are clever, if the users are intelligent, people are intelligent, then they can save themselves from the pitfalls, from the adverse impact of the technology. But somehow it does not happen on the ground, because when there's no limit to the use of the technology, and we are using to whatever extent we can. And here comes the problem. Any information which is being created in the digital space, or on the social media platform, so a lot of propaganda is being done, a lot of fake news is happening, a lot of such information is traveling, which is misconceived, which is misleading, and which can create problem in the society. And this is not something that the individual information creators are doing this. Even the established organizations are involved into this. So this is a matter of concern. So when we say that when we look at the contemporary media, contemporary journalism, and we try to look into the impact of the digital technology, so whatever good things are happening, such kind of things are happening, and we all are affected by that.
very common term we normally use, that this fake news, though this term was coined by Donald Trump. But even if we are not we are not convinced with the term, but it always signifies that there is some wrong information is traveling, which is detrimental to the growth of the society, which can create a right-like situation, which can accelerate violence in the society, which can create enmity among different communities and all. So we have to beware of this, and we have to see to this that there should be some kind of regulation on this kind of practices. But then here again there is a problem. What is that? Now, since 1950 till date, it is very difficult. It has always been very difficult to decide that whether media is to be regulated. Obviously, it should be regulated to the extent that there are no harmful effect. But then, if it is to be regulated, like in Article 92, I already referred, certain restrictions have been put. But then, who will regulate the media? That's a big question. If government is regulating media, then the whole essence of media is gone. But then the regulation should come not from the government, from the legislature. But then we have to understand the relationship between legislature and the executive. Legislature, we have a parliamentary democracy, but practically what happens? One who is in majority in the legislature is forming the government. Then the people who are sitting in the government are in a way controlling the parliament. So even a parliament is bringing a law, it's initiated, it's dominated by what the government thinks. So if the regulation is given to the executive and the legislature, then obviously the freedom is gone. And if it is not there, then what will happen? Then there will be such kind of stories traveling, such kind of contents created, wherein media is not to be controlled, is not possible to be controlled. Then judiciary comes into the picture, but all the time judiciary cannot be monitoring such kind of situation. As and when something is coming before the judiciary, only then the judiciary can take it up. So these are the problem areas with regard to the content creation and the use of technology to create those content. Now, I would also like to touch upon a little more about the present day media, which is basically the social media, as we all know. Now, in social media, the platform that I already talked about, right from Facebook to Instagram and Twitter, I mean, this X and all. But there is one more platform which has come parallel to the traditional media. What is that? The YouTube. Again, I mean, the digital technology is there. All platforms are based on internet. So this is an example as to how digital technology can be used to create a media platform which is complete in itself. Because in today's time there are newspapers which have their web editions, there are radio channels which have their presence in the digital space, their websites and all. We have television channels which have their digital presence, and all news capsules of different channels we can find on Facebook or the Instagram. All that is there. But another trend which is also very prominent, there are media platforms which are independent. They have no presence in print, radio, television. They are simply digital news portals, like the example of Wire or the News Laundry. I mean, all these examples are before us. Now, these are the platforms. These are the platforms which are mostly YouTube based. There are YouTube channels, hundreds and hundreds of YouTube channels. Now, in YouTube channel is as good as a television channel, because there are many YouTube channels wherein we find that their viewers are in lakhs and lakhs. I mean, huge numbers are there. So they are really competing the satellite news channels. But again, when we compare the conventional media, whether print or television news channels based on satellite news channels, and on the other hand, the YouTube channels, which are again digital based. The basic problem that we must understand, the most important line, that there is an absence of gatekeeping.
right? So in YouTube channels, obviously, or even if you and me are writing something on Facebook or any such platform, we do not get it checked by somebody. We do not take permission from somebody whether we should write it or not, whether we should share it or not. Obviously, we should all support it, because when we have Article 19(1)(a) and we have freedom of speech and expression and the derived freedom of the media, we need not to ask somebody. But the problem area is that if there is no gatekeeping, then the consequences could be hazardous. Anything can happen. We can write, we can, I mean, as you would have noticed on Twitter, lot of abuses are used, while, I mean, lot of trolling is used. I mean, people are after the life of somebody who is writing, who would have written something on any such media platform. So what is the net result? The net result is that the society seems more divided because of the use of the technology in the creation and the dissemination of the content. So this is again something which has to be checked. But again, how it is to be checked? Because, I mean, these are very, very, very big questions. Like, as initially I referred to, the government has always been very perturbed on this. And since when we talk about digital media, we have to look into as to how we can put a check on the content, on the digital content. Here I would refer to a law which is Information Technology Act, IT Act, which has also been amended, and which has prescribed a lot of provisions to put a check on deep fake and all, because deep fake is again a very serious problem in today's time, and common people will hardly be able to understand where the deep fake has been used, and how something which is completely 100% wrong can be presented as something which is completely true. So the Act is there, but then as far as the implementation of the IT Act is concerned, the latest provisions on the people, on the conventional media organizations, or individual content creator, there is hardly any impact, because the kind of implementation which should be there of the provisions of the IT Act has not been there. Now, coming to the government concerns, I mean, a lot of concern is genuine. I will not say that all concern is not right, though I also believe at the same time that this concern on the part of the government is always not very genuine, because any government which is in power is always averse to the dissemination of information which is detrimental to its own interest. But then some regulations, obviously, as I have been saying repeatedly, have to be there. So in 2021, the government prescribed certain regulations in February 2021, and related to these regulations, number of cases have been filed in the Supreme Court, and for the last 4 years, those cases have not been finally disposed of. So in a way, I should say that these are the sub judice things, and even the Supreme Court is finding it difficult to decide those cases. Right now, these rules prescribed in February 2021 covers both the news as well as entertainment. Now, when we come, though I don't want to touch directly the entertainment side, but then as an example, we just look at a film. A film which is released in the theater has to have a certificate from the Central Board of Film Certification. But if the same film is to be shown on the television screen, and particularly we can also include the example of the films which are the foreign films. No, there is very less regulation, and that is why we find such kind of web series are becoming possible, wherein this gory violence is there, and a lot of such things, such abuses is there, which are thrown like this, and there is no check on that. Now, there can be a lot of arguments and the counter arguments. There may be an argument that these are the things which exist in our society. So obviously, there is no harm in that. The kind of society we have, the same will be reflected on our screen. But this is a partial truth. I mean, there are a lot of things which are in society, but not everything can be shown. Not everything can be said. And I mean, here comes the major area of ethics. So regulation versus ethics.
So, what all things should be included in regulation? What all things should be included in ethics? Now, ethics is something, as we mostly understand, ethics is something which cannot be prescribed by anybody. It cannot be prescribed by the executive. It cannot be prescribed by the legislature. It cannot even be prescribed by the judiciary. Ethics is something which should evolve. We should evolve from the society. We should evolve from the industry. So here, in the case of media, it should evolve from the media industry. But when there are such kind of practices, like in the case of television news channels, for instance, when this whole TRP issue is there, because everybody has to sell. Newspaper also have to be sell if they want to survive. Otherwise, they will close down. Television also have to sell because otherwise they will not be able to meet the huge cost which is necessary for running a news channel. So, from where that cost will come? When more and more people watch the television channels, and which leads to more advertising coming to that channel. So, and then more revenue. And if the news is to be created and to be broadcast in favor of the ruling dispensation, then obviously the government advertising will also flow into. Now, in such a case, the ethics goes to the winds. Nobody will care for the regulation. In the case of television, for instance, when this, I mean, there used to be too many channels, so an organization was established, which we know as the NBA. NBA was established. They brought their NBSA, their own guidelines, their ethical guidelines, but how many people are following those guidelines? So the problem is that the digital media, the way digital media penetrated into our lives, the way digital media changed everything with regard to the creation of the content, to dissemination of the content, and the reception of the content. So this has changed the entire thing. So journalism, when we say journalism, the hardcore journalism, if I can say, the conventional journalism, that's the biggest casualty in today's time. It's very difficult to find what is actually genuine journalism, the kind of journalism, because that is now felt something which belong to the old school. So nobody has any concern for the sanctity of news. I mean, 30 years, 40 years back, those who started their career at that time, they were very, very sensitive on these issues. But nowadays, with the advent of media, with the expansion of with the expansion of the technology, people hardly care for ethics. Even in our day-to-day life, even in our society, in societal life, we hardly find people find any concern for such things which 10, 20 years back were not. I mean, I'm not saying that something should be taboo and we should hide everything. We should not disclose what in whatever people are interested in. But somewhere we have to draw the line. But what is that line which is to be drawn? Who will draw those lines? And even if somebody is drawing that line, whether people will adhere to that line or not, these are very, very big questions which we have to look into when we talk about the impact of the digital technology in today's media. So uh, talking about further on this issue, we have to understand that whenever because we talk about, and one more point I can raise here, we normally talk about media literacy. Media literacy could be an answer to whatever I have been talking about, because you cannot restrict anybody, and I also personally am not in a favor of restricting anybody to express himself or herself. But then if there is no control, no regulation, no ethics, then there will be I mean, very, very chaotic situation in the society, and everybody will suffer because of that. So, the only answer, according to me, and in many media related courses, Professor Bhanawat would agree on this, that we have started introducing papers on media literacy. But the simply introducing, but the paper on media literacy
in media courses will not help. We will also have to see to this that more and more workshops are conducted on these issues. The common people should understand, what is meant by media. When we say media, means a basic sensitization about media, about developing an understanding about media, developing an understanding about different media platforms, from traditional media platform to the digital platform, how to create news, what kind of news can make what kind of impact, how to receive news, how to analyze news, how to extract meaning from the news. These are some such things which we need to take up in, particularly the senior people, the media educators, the even senior media practitioners who are not the direct beneficiary of the whole game, wherein people are making more and more money. Making money is fine. I mean, even in the 1970s and 80s, the newspaper owners were doing that, because if that kind of money is not being generated, the organization will close down. But making profits cannot be the only motive. The social responsibility, because earlier I was talking about ethics, linked to is the social responsibility. A media organization has to behave responsibly. A journalist has to be socially responsible, because you are there not to create any unrest in the society, not to see to this that people are fighting against each other in the society. That is something which is the main responsibility. Providing news is definitely the first responsibility of a journalist working in a news organization or working independently. But that information should not be harmful. So journalists also need to understand. I would also prescribe that such kind of workshops or such kind of lecture series or such kind of things should happen in media organizations, also. Now, within the media organization, though we find that number of news channels have created such kind of platforms, many news channels have done this, that they have appointed few people who are there to keep an ethical check. Earlier, this used to be the whole ombudsman kind of thing, which is started from Times of India. So in print also this is started, wherein we talk about the self check. But then I don't find that self check has worked properly. But if I try to give you the latest example, as I said, there are such kind of people employed in television news channels whose basic job is to check the fake news. We have to be careful about the veracity of the news. We have to be careful about the source of the news, because if that is not there, then all fake news, whether we use fake news term or not, but then such kind of information, such kind of news which is unreliable, which is not based on the fact, which is being spread with the ill-conceived notions and all. Earlier also it was happening, I mean 40, 50 years back. But the magnitude which is there in today's time, because this digital media has gone deep into our lives. I mean, from 24 hours we are affected by that. So any wrong information can do such kind of harm, such kind of damage to the society, which cannot we cannot even calculate. So that is how this matter of caution, I would say that digital media has definitely brought a lot of changes in journalism, in the fourth pillar of the society. But it has also made us conscious that a lot of social responsibility has to be exercised, and we have to be very careful that no such thing should be there which is damaging. Because if it is contributing to development, there used to be a time when we all believed in 1950s and 1960s, when the country has attained freedom, that media is something which is a catalyst to development. So, but from there, this entertainment came. But then that kind of goal is nowhere seen. What for media is there? What for the information dissemination is there? Why we are into creating information and providing that information to the people, to the betterment of the society, whichever way we interpret. But ultimately, the goal of information dissemination, content creation, content receiving, has to create a better society, has to be for the betterment of the people, so that
people go forward, and their quality of life improve. That's ultimately, whether we find it a lot of idealistic, but then still that has to be the ultimate. We cannot, I mean, at the global level, just look at as to what is happening, right from the Ukraine to Palestine, and all media organizations are playing a vital role. Digital technology, media's boundaries have diminished, so anything can go to any level from one country to another. And if media is being used for the propaganda purpose, for the dissemination of wrong information, and if you can compare the kind of news stories which are broadcast by Al Jazeera to what is said by Fox News, the comparison will be very, very evident. So when such kind of things are happening, when the world peace is at danger, when so many conflicts are happening, when within the country so much conflicts is there in the name of the religion and caste and all, we have to be careful that digital technology is something which has come to benefit us, not to harm us. So with this understanding, we have to understand that this digital technology has to be used very judiciously with a very clear mind, so that no harm is done to the society. Thank you. चलिए, बहुत बहुत आभार भाई अमरीश जी। आपने बहुत विस्तार से तकनीक ने किस तरह से मीडिया को प्रभावित किया है, किस तरह से वो लाभान्वित हुआ है, उसका बहुत ही रोचक दृष्टि से पूरा ऐतिहासिक विकास क्रम क्रेडल मशीन से लेकर के हम इंटरनेट युग तक किस तरह से प्रवेश किया, और न सिर्फ प्रिंट बल्कि हमारे प्रसारण माध्यमों पर भी उसका क्या असर हुआ, किस तरह से उन्होंने उस परंपरागत ढांचे से बाहर निकलकर अपने आप को उन नई तकनीकों की के अनुरूप ढाल करके न सिर्फ प्रिंटिंग में, गुणवत्तापूर्ण प्रिंटिंग में, बल्कि प्रसारण के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं को एक तरह से जन्म दिया। कैसे कंटेंट क्रिएशन में परिवर्तन हुआ, किस तरह से स्पीड बढ़ी, और उसके साथ उन चुनौतियों के बारे में बात करते हुए समाधान की ओर भी आपने एक राह दिखाई। चाहे वो ओम्बुड्समैन की बात हो, स्वनियंत्रण की चुनौतियां हों, और किस तरह से ये माध्यम हमारे जीवन में इतनी गहराई से जुड़ गए हैं, जरा सी भी गलत सूचना, भ्रामक सूचनाएं हमारे जीवन को, न सिर्फ जीवन को बल्कि समाज को भी इस तरह से प्रभावित करती हैं। उसका बहुत ही गंभीर और सारगर्भित विश्लेषण आपने किया। इसके पूर्व के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग 40 से अधिक पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। उनके मन में यदि कोई शंका हो, समाधान चाहते हो, पूछना हो, तो वो अपन चर्चा शुरू करें। इसके पहले हमारे साथ भारतीय विद्यापीठ के सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के जयंत राठी जी जुड़े हैं। मैं जयंत से अनुरोध करूंगा कि आज के इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या की स्मृति में हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना जी, उनको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। ये ई सर्टिफिकेट हम व्हाट्सएप पे आपको भिजवा देंगे। सर, कम्युनिकेशन इंडिया और भारतीय विद्यापीठ की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर न्यूज़ आज के टाइम पर पहले आ जाती है और बाकी न्यूज़ चैनल विदाउट वेरीफाइंग दैट और उसे पब्लिश कर देते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण आज के टाइम पर एक जेन्युइन रिसोर्स को फाइंड आउट करना, एक न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को फाइंड आउट करना कितना ज़रूरी है, उसके रिगार्डिंग हमें बताया। एंड वी आर प्लीज्ड टू हैव योर टाइम सच ग्रेट सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। ये सर आपके लिए एक ई सर्टिफिकेट है। थैंक एंड यू। नेक्स्ट सर आपके पास आपका मोमेंटो है, एंड जी। होपफुली हम आपके पास विद इन फ्यू सेकेंड्स, जैसे ये वेबिनार खत्म होगा, आपके पास ये पहुंच जाएगा सर। ठीक। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है, अपने पास थोड़ा समय है अभी। जी। यदि किसी के मन में कोई सवाल हो, और इसी बीच में जैन जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो फीडबैक सर्टिफिकेट वो अपना फॉर्म है वो आप शेयर कर दें, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको भर दें। उनका भी ई सर्टिफिकेट हाथों हाथ जनरेट हो जाएगा, और उसकी पूरी प्रक्रिया बाद में जैन जी आपको समझा देंगे। जी, सोनू हमारे साथ बिहार से जुड़ते हैं हर एपिसोड में। सोनू, कुछ कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है सोनू। सोनू की आवाज नहीं आ रही। कोई और मित्र कुछ पूछना चाहें?
और नहीं तो फिर हम वोट ऑफ थैंक्स के साथ इसका समापन करेंगे। नहीं, अभी किसी ने हाथ भी रेज किया था, somebody raised their hand. अ, कोई भी जो सवाल पूछना चाहते हैं अपना माइक वो सर हाँ रजत जी। निखिलेश सुनील पाठक। निखिलेश, हाँ। यस सर, हम्म, गुड इवनिंग है एंड थैंक यू हमारे रिसोर्स पर्सन सर, आपका बहुत अच्छा ये था सक्सेना सर, अमृत सर एंड भानावट सर का तो हमेशा रहता ही है। ये 184 है, यानी बहुत बड़ी बात है जो ये चल रहा है सीरीज। सर मैं भी जर्नलिस्ट था पहले, बाद में मैंने एकेडमिक्स में चांस लिया। मैंने हम्म, पीएचडी कंप्लीट की है सर, लेकिन एक सवाल हमेशा ये रहता है, जैसे आपने कहा कि कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जर्नलिज्म कैजुअलिटी बनता जा रहा है सर, कहीं ना कहीं न्यूज हैज बिकम अ कंटेंट, उसकी वजह से है। न्यूज न्यूज नहीं रहा, लेकिन अब वो कंटेंट बन गया है। उसकी ये एक क्या कहते हैं, डेफिनेशन चेंज हो गई है न्यूज की। नहीं, सिर्फ नाम बदला है। वो आप कुछ भी नाम दे दीजिए, बट एनी कंटेंट, अगर आप न्यूज की जगह कंटेंट शब्द भी इस्तेमाल करें, एनी कंटेंट हैज टू बी ट्रूथफुल, हैज टू बी जेन्युइन, हैज टू बी फैक्ट बेस्ड। और खास तौर से अब जब हम लोग डेटा जर्नलिज्म के जमाने में आ गए हैं, सो एनीथिंग विच इज बीइंग क्रिएटेड, विच इज बीइंग डिसमिनेटेड, हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हैज टू बी बेस्ड ऑन डेटा. So if अग्रीड। something is factually wrong, something is misplaced, misconceived, ill-conceived, and it's deliberately being done to befool the people, to deceive the people, to serve the vested interest, then obviously it cannot be accepted. चाहे हम न्यूज के 40 साल पुरानी बात करें, चाहे हम आज के कंटेंट की बात करें, that remains the same. इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। सर और अगर तो फिर ऐसा हो रहा है तो गलत है। सर तक ये जी। आपने जैसे कहा कि कैजुअलिटी है, तो ये हम्म। कांट से ब्लेम, कैसे? लेकिन फिर भी नहीं, किसी ना नहीं, किसी की तो जिम्मेदारी बनती है, तो वो नहीं, किसकी सभी की जिम्मेदारी है? ज़िम्मेदारी है ये। नहीं, नहीं, सभी की ज़िम्मेदारी है। मैंने तो इसको अब पॉइंट आउट भी किया कि मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन की तो ऑब्वियसली प्राइमरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैंने ज़िक्र किया टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स का, सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स का, तो अब जो फाइट है, वो सेकंड्स की फाइट है। तो टाइम ही नहीं है किसी के पास चेक करने का। मैंने इसलिए गेट कीपिंग की बात की थी, जो न्यूज़पेपर में करेक्ट। आज भी होता है। न्यूज़पेपर में अगर एक रिपोर्टर रिपोर्ट लिख के लाता है, वो उसका चीफ रिपोर्टर देखेगा, फिर न्यूज़ एडिटर देखेगा, फिर वो जाएगा, 2 जगह चेक हो जाएगा। तो क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार बनना है न्यूज़पेपर। टीवी में एक-एक सेकंड की लड़ाई है। सो विदाउट गोइंग इनटू द वेरासिटी ऑफ द फैक्ट्स, विदाउट हम्म। गोइंग इनटू द ट्रुथफुलनेस ऑफ द फैक्ट, हम्म। इमीडिएटली इधर आया, उधर चलाओ। So obviously, in such a cutthroat competition, such casualties are happening wherein you are broadcasting a wrong news, later on realizing कि एक चैनल ने गलती की, दूसरे ने की, तीसरे ने की। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। किसी ने भी इतना टाइम नहीं लगाया चेक करे, क्योंकि सबको लग रहा था वो पिछड़ गया, उसने भी लगा दी, उसने किसी और ने सोचा पिछड़ गया, उसने भी लगा दी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसलिए ये कैजुअलिटी हो गया है। एंड इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्यादा सेंसिटिविटी हो। हमारी जो संवेदना है वो खत्म हो गई। हमें मतलब ही नहीं कोई मर रहा है जी रहा है, खबर पहले। तो ये मीडिया का काम नहीं है। तो इसीलिए वह आपको एथिक्स की बात करनी पड़ेगी विद इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। और व्यूअर्स का भी थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। व्यूअर्स को भी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पसंद आता है, जितने लोगों को हम्म। भी पसंद आता है। उसी से टीआरपी बनती है। तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये इट्स ए फेज। जिस तरह से हमारी सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है पिछले 20-25 सालों में, उसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सारा ढांचा, उनका काम करने का तरीका बदल गया। और जो रिसीवर्स हैं, उनका जो रिसीविंग थी न्यूज़ की, वो उनके स्टैंडर्ड भी बदल गए। और मार्केट बहुत हावी हो गया। मार्केट इन द सेंस कि जो मार्केटिंग का पक्ष है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, सबको पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो चलना नहीं है। और पैसा सबको लगता है एथिकल तरीके से नहीं आएगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने इसको भी टच किया था कि हम एज यूजर पैसा खर्च करना नहीं चाहते। अच्छे कंटेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी भी आप देखिए, बहुत सारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, चाहे वायर से लेके जितने भी हैं, कुछ खबरें तो वो ऐसे ही देते हैं, बाकी के लिए वो आपको रुक जाता है, एक पैरे के बाद कहता है कि आप पे करिए। तो जब तक आप पे नहीं करेंगे तो आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिलेंगे। बट समहाउ
हमारी सोसाइटी ऐसी है, अब इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ऐसे ही है, जहाँ पर हम फ्री में चाहते हैं सब कुछ, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, फ्री में चाहेंगे तो वो उसके साथ वो कूड़ा-करकट भी मिलेगा जो ठीक नहीं लगता। करेक्ट सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर फॉर एनलाइटनिंग ऑन दिस। देखिए, अमरीश जी, स्पीड के चक्कर में धर्मेंद्र को हमने मार दिया। हाँ, हॉस्पिटल ग्रेट। हॉस्पिटल में एक जने ने वो वीडियो बनाया कि धर्मेंद्र भाई अनकॉन्शियस हैं और उनके वो हाँ। नहीं, वो सनी देओल और वहाँ खड़े हैं, वो वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल कर दिया। अब बताइए, किसी के निजी क्षणों की इस तरह से सार्वजनिक, किसी के दुख का, पीड़ा का इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ तक न्यायोचित है? तो ये मुझे लगता है स्वयं के विवेक पर निर्भर करना पड़ेगा। अ, उस दिशा में मानव जी पहले भी था, जी, लेकिन पहला उसका जो मैंने पहले भी कहा मैग्नीट्यूड ये नहीं था, क्योंकि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी, पहले भी पेपेरेज़ी होता था, सब हाँ, कुछ हाँ। होता था, नहीं, लेकिन वो लिमिटेड था चूँकि हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी हाथ में नहीं आई थी। अब तो बिल्कुल, हमारे हाथ में अभी हम 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो हुआ इसका खतरा है सारा ये। जैसे पहले भी जयप्रकाश नारायण की सूचना गलत चली गई थी। अन्ना दुराई की आकाशवाणी ने गलत खबर दे दी थी, निधन के समाचार दे दिए हाँ, सीधे समय, हाँ। है ना? तो नहीं, लेकिन अब वो एक लेकिन असर लेकिन बहुत है। वो देखिए लेकिन प्रोफ़ेसर भानावत वो गलती देखिए गलती तो किसी भी प्रोफ़ेशन में किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इल इंटेंशन नहीं था, गलती हाँ, थी। हाँ, बिल्कुल, अब हम जानबूझ के करते हैं बिल्कुल, और ब्रेकिंग तब न्यूज़ के और है। दूसरा दूसरा हम इनसेंसिटिव होके करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम जो है वो ऐड हुई है। सही सही कह रहे हैं। हाँ साहब, और किसी का कोई सवाल? निखिलेश जी, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी? सर मैं पढ़ाता नहीं, मैं एक पीआर एजेंसी ज्वाइन किया। मैंने 4 साल पढ़ाया, 2 साल एमएसयू और 2 साल पारुल यूनिवर्सिटी में। उसके पहले मैं जर्नलिस्ट था, अच्छा, अच्छा। स्पोर्ट्स पाटन कहाँ, जर्नलिस्ट। गुजरात में? यस सर, यस सर। ओके। हाँ जी, और कोई सवाल? हेलो, हमारी आवाज? हाँ जी, बोलिए। सर, अमरीश सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी पॉइंट्स को रखा। और जैसा कि धर्मेंद्र जी के बारे में जो गलत न्यूज चल रहा, उसके बाद मैंने देखा कि लगातार अंजना जी का भी पोस्ट कर दिया गया। तो ये चीज जो आपने जो लास्ट में बताई सर, कि लगातार होते रहा, हो मतलब ये इस तरह की चीजें जो लगातार होता है। मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या इसके लिए जो सोशल मीडिया के जो मोबाइल पकड़ कर कोई अगर अपना डाटा ले रहा है, और वो कोई जर्नलिज्म की उसके पास डिग्री नहीं है, ना कोई समझ है, तो ऐसे चीजों के लिए सोसाइटी के लिए तो सर दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ते जाएगा, और जो हमारे जर्नलिज्म करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए मुश्किल बनते जाएगा। इसके लिए भी कुछ तो कुछ बताना चाहेंगे सर, मार्गदर्शन मिल पाए। नहीं देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जो डिग्री वाली अनिवार्यता के पक्ष में नहीं, ठीक है? मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा भी आज के संदर्भ में क्या कहा जाएगा? अब डिग्री डिग्री भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री हो वो पढ़ा लिखा ही हो। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो वी हैव टू बी एजुकेटेड इन द सेंस दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जो भी सूचना दे रहे हैं, अगर हम जर्नलिज्म में हैं तो वो करेक्ट होनी चाहिए। मतलब इरादतन गलत नहीं होना चाहिए, नीयत नहीं खराब होनी चाहिए कि इसको फँसाना है, इसको लटकाना है, इसको ये इस इरादे से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गलती हो जाए वो एक अलग बात है। दूसरा क्रॉस चेक। हमारे आज से 30-40 साल पहले इस हद तक न्यूज़ एजेंसीज़ में आज भी होता है। क्रॉस चेक कैसे करते हैं? एक-एक चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं। इवन जो फिगर्स हैं, बड़ी फिगर्स हैं, उनको वर्ड्स में भी लिखते हैं, उनको नंबर्स में भी लिखते हैं। फिर अभी भी बहुत ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में ख़ास तौर से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में बहुत ही कॉशियस हैं। वो 1 आदमी, 2 आदमी अलग-अलग सोर्सेज़ से चेक करते हैं, जहाँ भी डाउट होता है। गलत नहीं जाना चाहिए, खबर भले ही मिस हो जाए। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये टेलीविज़न ने बदल दिया, गलत या सही जाना पहले चाहिए। तो ये जो चेंज आया ना ये टेक्नोलॉजी का, और हमको हर समय इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो मैड रश है कि 1 सेकंड भी पिछड़ ना जाए, रिसीवर भी हमें मिल गया, हमें कोई सूचना मिलती है, बहुत सारे यूज़र्स आप लोगों में से करते होंगे, इमीडिएटली डाल दिया उसको फेसबुक पे, अपने से ही डाल दिया, जो पता लगा। अब आपने ये नहीं देखा कि जो आपको पता लगा वो सही सोर्स से पता लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे मैंने कहा जो फैक्ट चेक की बात है, वो शायद मैंने नहीं कही, तो अब मैं ऐड कर देता हूँ।
जो फैक्ट चेक की बात है, जब मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं तो फैक्ट चेक और फैक्ट वेरिफिकेशन की बात भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह की वर्कशॉप्स करें, इस तरह की कॉन्शियसनेस पैदा करें तो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है। खत्म होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। धन्यवाद सर। हाँ इस बार सबको सर और हमारे सवाल। बिहार में जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, तो ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति जब भी बनती है, कोई किसी स्टेट में जब चुनाव होता है, तो मैं देखता हूँ कि फेक्स बहुत सारे न्यूज बनते हैं, और जब से एआई है तो इसका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रहा है। तो और जैसा कि बनावट सर, आपका जब कार्यक्रम इस तरह का जब चलता है, तो हम लोग एक जो मीडिया से जुड़े हुए छात्र हैं, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ों पर एनालिसिस करने का एक मौका मिल पाता है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती है, तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर लोगों को रोकता हूँ कि आप इसे शेयर करने से बचें। तो ये मैंने आप लोगों से सीखा है सर। और अमरीश सर, आपने भी बहुत सारे कार्यक्रम करवाते रहते हैं जीडीसीएस के माध्यम से, तो मैं उसमें भी जुड़कर बहुत कुछ सीखा हूँ। हाँ, तो मुझे आप पता लोग है, इसी मैंने आपको देखा है, तरह आप पहले आते रहे कार्यक्रमों में। आप इसी तरह निरंतर इसी तरह का यह कि चलता रहे, तो हम लोग मार्गदर्शन में कुछ नया चीजों को कर पाएंगे। धन्यवाद सर। चलिए ये बहुत उसी अच्छा। तरह से है सोनू जी, जैसे कहते हैं ना, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है। हमने आपको बताया, आप आगे बताइए, तो भी ये जो बात है बहुत दूर तक पहुंचेगी। सही 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 बात है। हाँ जी, और कोई सवाल? नहीं तो फिर वाइंड अप करें। हेलो सूरजदेव जी, जी राकेश जी। जी, गुरुजी प्रणाम। और मैं आज के मुख्य वक्ता जी को भी सादर प्रणाम, बड़े भाई सोनू जी को राकेश सादर जी, अपना प्रणाम। परिचय परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राकेश है, मैं सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनौली विकासखंड पार्टी जिला चंपावत उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। ओके जी जी। जी बोलिए। जी जी, आदरणीय गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, मतलब मेरे मन की इच्छा ये है कि जिस प्रकार से एआई ने अभी कुछ ही समय में अपना प्रभाव जमा दिया है, और आदरणीय श्री सोनू भाई जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की इसके प्रति, तो मैं कभी कभी मेरा मन तो ये कह रहा कि मैं एआई को शराब कहने का मन करा, कि जैसे शराब ने अपना प्रभाव फैलाया फैलाया फैलाया, वही स्थिति इसकी भी होने वाली है कि हम चाहे इसको कितना ही कम करने की कोशिश करें, और ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ने का, सकारात्मक प्रभाव हो तो बढ़िया है, लेकिन नकारात्मक तौर पर इसके बारे में आप थोड़ा सा सुझाव देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती। मैंने तो आपको हिक्की गजर से लेके आज तक बताया, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम आज यहाँ तक नहीं आ पाते। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वालों में प्रॉब्लम है। आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आपको उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस्तेमाल आप ठीक से करें टेक्नोलॉजी को, और जो आपका वैल्यू सिस्टम है, सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ठीक कर लें, तो यही टेक्नोलॉजी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। टेक्नोलॉजी को दूर रख के, टेक्नोलॉजी को एक्यूज़ करके आप कुछ नहीं कर सकते। तो एआई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसके बुरे इस्तेमाल से कैसे बचना चाहिए, ये समझना पड़ेगा। वही जी बड़ा पुराना उदाहरण है, धन्यवाद। चाकू डॉक्टर के हाथ में जान बचाएगा, डाकू के हाथ में तो जान ले लेगा। इसमें चाकू का एग्जैक्टली दोष नहीं है, एग्जैक्टली। आपकी मनोवृत्ति कैसी है वो महत्वपूर्ण है। जी, और कोई टेक्नोलॉजी सवाल? है तभी, हाँ, जी बिल्कुल। मानव जी, टेक्नोलॉजी है तभी तो हम यहाँ बात कर पा रहे सही हैं। सही सही बात है सर। अब इसका भी मिसयूज हो तो सकता है। हाँ, इसका भी मिस होता ही है। होता ही है। हाँ कोविड काल में था ना, वो पोर्नोग्राफिक फिल्म चल गई, बताइए बीच में किसने चला दिया, मिसयूज किया ही ये लोगों ने। हाँ, मेरे प्रोग्राम को भी हैक कर लिया था, हाँ, चलते प्रोग्राम को बिल्कुल लोगों ने। बिल्कुल, तो ये सब चैलेंजेस रहते ही हैं। ठीक चलिए है आइए, राकेश जी, तो सवाल। हाँ। टेक्नोलॉजी से मत भागिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी मेरे ख्याल अब कोई सवाल नहीं कोई है और और। बात है कुछ? हैं? कोई और कुछ जी कहना ठीक। चाहते हैं? जी सूरज नमस्ते देव जी आज शांत है, सूरज देव जी अक्सर पूछते हैं। आज जयवीर सिंह। जी। जी सभी को जयवीर जी, नमस्ते। जयवीर सिंह हाँ पूना परिचय से बोल दीजिए रहा और हूँ, उसके छोटा। बाद फिर, वैसे आप पूना से हैं। हाँ जी सर, एआई के विषय में मेरा एक अनुभव है कि एआई पर जितने अच्छे एक्सपर्ट बैठेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो ये हमें बहुत भ्रमित करने वाला है। मैं अभी थोड़ा शोध कर रहा था अपने भक्तिकालीन संतों पर। तो एआई के पास कुछ भी इसके पास नॉलेज न होने के कारण वो दादू दयाल जी के दोहे कबीर जी के बता देते हैं, कबीर जी के दोहे किसी और के बता देते हैं। तो इसीलिए एआई विद्वानों के हाथ में, यानी एक्सपर्ट के हाथ में ही रहेगी, और वहां पर बैठना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे विद्वान बैठेंगे तभी इसका शुद्ध उपयोग हो सकता है, नहीं तो ये बहुत भ्रमित करने वाली, मेरा ऐसा मानना है। नेचुरली टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में नहीं है फिर तो नुकसान होना ही है उसका। तो
टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, नॉलेज को भी रिप्लेस नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी सिर्फ असिस्ट कर सकती है, तो हमें टेक्नोलॉजी की भूमिका को समझना पड़ेगा। वो समझ लेंगे तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जयवीर जी, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल कह रहे हैं अपन, वो कृत्रिम है ना? तो जो वास्तविक प्रतिभा है वो तो आपके हाथ में है, आपके पास है। वो आपकी सहयोगी हो सकती है, आपका वो मालिक नहीं बन सकती है। और जिस दिन मालिक बन जाएगी, स्वामित्व उसके पास आ जाएगा, तो संकट आ जाएंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अपन समापन की ओर ले जाते हैं। मैं भाई अमरीश जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और अपने अनुभव इतनी खूबसूरती के साथ, उसकी पूरी की पूरी जो परंपरा है तकनीक की, और तकनीक हौवा नहीं है हमारे लिए, और हर तकनीक जो है वो अपने दौर में आलोचना का शिकार होती है। जब भी कोई नई तकनीक आई है, प्रिंटिंग भी आई, तब भी दुनिया में समस्या हो गई थी कि कैसे धर्म ग्रंथों को कोई दूसरा पढ़ लेगा। फिर जब फ़िल्म आई, तो आपको याद होगा कि पुरुषों के और महिलाओं के जो पात्र थे, वो भी पुरुष निभाया करते थे। है ना? तो ये हमेशा रही है, ये कब ऐसा दौर नहीं रहा। जब कंप्यूटर्स आए थे, तो हड़तालें हो गई थी देश भर में, और अब कंप्यूटर नहीं आता है आपको, तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए ये ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, और मशीनों की भी ट्रेनिंग होती है। आज वो ये गलत बता रहा है, कल वो सही बताने लगेगा। वो ला कहाँ से रहा है? जो आपके इंटरनेट की दुनिया में है, वहाँ गलत क्या गलत सूचना आएगी आपके पास। हर व्यक्ति फ़ीड कर रहा है, जैसा अमरीश जी ने कहा, हर व्यक्ति क्रिएटर हो रहा है। अब वो अपनी क्षमता से क्रिएट कर रहा है। यदि उसने गलती की है, तो वो गलती आगे तक जाएगी। तो ये सारे चेक एंड बैलेंसेस आने वाले टाइम में आएंगे। हम सभी अपनी एक बौद्धिक क्षमता से काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इसका प्रसार होगा, वैसे वैसे चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर, नए संभावनाएं आएंगी। आप पीछे नहीं लौट सकते, इसको स्वीकार कीजिए। जो एक बात कही थी अमरीश जी ने, संवेदनशीलता की बात, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में वो संवेदना से जुड़ी हुई दृष्टि पैदा कीजिए। फिर आप शायद बहुत सारी चुनौतियों से अपने आप को बचा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी अगली वेबिनार 20 नवंबर को है। इस बार का हमने विषय रखा है डॉक्टर लोहिया का भारत, समता, स्वतंत्रता और स्वराज का संकल्प। जयंत तोमर, वो भी एक वरिष्ठ मीडिया एजुकेटर रहे, वो आपके साथ होंगी। और एक डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा रही हैं। तो ये दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ में होंगे, जो इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। तो 20 नवंबर शाम को वही 5:30 बजे हमारी मुलाकात होगी। भाई अमरीश जी के प्रति हमारा बहुत बहुत आभार, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इसी से जुड़े हुए और मीडिया से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर भी हम आपके अनुभव सुने और इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएं। आप सभी से अनुरोध, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें। और जो हमारा कमेंट बॉक्स है, कि पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों से हमें आप लाभान्वित करें और आगे मार्गदर्शन करें, ताकि इस विचार यज्ञ को हम और अधिक आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये विंडो खुली रहेगी, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है पार्टिसिपेंट्स को, वो जयंत जी आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, और सर्टिफिकेट लेके ही आप क्विट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू जयंत जी। ठीक। आप अमरीश जी चाहें तो क्विट कर सकते हैं अब। बाकी का जो इनका औपचारिकताएं हैं वो कर लेंगे, है ना? तो जयंत जी, हम लोग क्विट कर रहे हैं, आप आगे का संभाल लीजिएगा, जी है सर, ना? आई विल टेक इट। डियर पार्टिसिपेंट्स, चैट बॉक्स में आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है। आप फीडबैक फॉर्म के लिंक पर क्लिक कीजिए। जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, नेम एंड ईमेल आईडी एक्यूरेटली फिल करना है। उसी के बेसिस पर आपका सर्टिफिकेट आपके पास मेल आईडी पर आ जाएगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या है फिल करने में, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है वो विंडो लीव कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने में किसी भी तरीके की समस्या है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आप अनम्यूट करके बता सकते हैं।
डियर पार्टिसिपेंट्स, अगले 10 मिनट में ये सेशन ओवर होने वाला है। अगर आपने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है, आपको इश्यू आ रहा है, तो आप बता सकते हैं।